Good evening, friends. Welcome once again. All familiar faces, probably. Suresh Adhiyeri, I don't know if you have attended this earlier. No, I have not. Okay, so this is your first time. So at least the other four people like Subramaniam Vishwanathan, Raman sir, Kamal Sethia ji, and Dolly Jaiswal, right? They have all attended. So they know the format, they know what to expect. Hopefully, some more people may join. Otherwise, we'll have a short and sweet evening. That is it. Otherwise, it will be a slightly longer evening, but I'm sure it's good and enjoyable for all of us. So, I would like to welcome all of you for this particular session. And all I can say is that this is one area where we can speak our heart out. We don't have to have any constraints and restrain ourselves. Can do whatever is in line with the overall code of we have the code defined, like the do's and don'ts are already in place, like we can speak about anything except religion and politics, so that there are the two exceptions. So this being the case, so we are open anything, but normally we try to give it a structure by having it some kind of a topic to discuss. And in and around that, we can discuss. I think Kamal Sethi has already raised his hand. You have something to say, Kamalji? Please go ahead. No, it's just that um, we normally do not start in time. Today, since we've started in time, we have only 8 participants, and I'm sure people will join in because this is a very popular program. And I can start with any topic which you give. Wonderful, wonderful. Yeah. Loving it. Uh, in fact, this morning I was having a chat with Raman sir. He was asking what is the topic for this evening. I said that I have not thought over it. I mean, most of the times I do it extempore. I don't plan too much about it. So he suggested some topics. Of course, offhand I don't remember. One was philosophy, which I said I don't understand, and one was regarding that's a very good topic. One topic I love. Philosophy, yes. Yeah, he asked about one particular topic which I think is very relevant to all of us to take up. That is, as seniors at our age and stage of life, what can we learn? Whether learning is possible, what kind of learning can we do? You can correct me if this is my interpretation of what you had asked. So, learnings, how can we learn? What can we learn? Is there a limitation today with which we operate? And how can we learn? And what is the best way of learning? While we all know the most cliched kind of a statement is that learning is a continuous process. We continue to learn always, at any point. We should be open to learning and learn from the learned ones, regardless of age. So I'm perfectly open to learn from my grandsons who are 12 and 6, because they know certain things which I don't. So, and we should not have that ego that comes in the way to say that Kiare, I am your grandpa and what are you sikhaying me, kind of a thing. So this is the overall topic about learning at this age and stage of life. Some things we can learn, some things we cannot. We would better have an idea about what is I think even in the ideal younger and days, possible to learn. Raman What is sir, the I can't become a poor what? Raman sir, I think that limitation is true for every age. Yeah. Every age we cannot. I mean, if I wanted to be a cricketer, I can't become Tendulkar. I can become a cricketer of my own at my level. So, what can we learn? Okay, and what are the necessities that emerge at this stage of our lives where we have to learn certain things? So, the floor is open, and Kamal Sethia ji has offered to be the first speaker. So we would love to hear from you, Kamalji. Okay. Lakshmanji, as you rightly said, it's a continuous process. Right. See, the knowledge is not a destination, it's a journey which goes on. And there is a need to be up to date as far as the knowledge is concerned. See, most of the problems of seniors occur only when we do not go with the time, changing time, because then we are left behind. We have grudges,
we have some complexes, and that has a very adverse effect on your psychological state of mind. What I feel is that the areas in which we already have expertise, there we should try to impart knowledge to the younger generation. And where in certain areas which were not taught to us, which were not there when we studied in school, they need to be, we need to study them now. And I'm telling you, since ये गुफ्तगू है, इसलिए मैं आपको एक गुफ्तगू ही बताता हूँ. बताइए जी. You're all yours. मैंने अपने एल्डर सन को जब पेंटियम 786 ऐसे कुछ आता था, तो जब इंट्रोड्यूस ही हुआ था, तो हम दिल्ली गए थे कंप्यूटर खरीदने के लिए, और हम एक पीसी लेकर आए, और उस पीसी को एक एयर कंडीशन कमरे में रखा, जूते खोल के जाते थे. You must be remembering all those days, Yeah. And then I asked him to teach me. अरे अभी आप क्या करोगे, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ. So I sent him to a tuition nearby. So that gentleman used to take 2 hours class. So he started with the DOS and Windows and all those things, and the programming languages. So as far as the hardware is concerned, I was quite aware of. And since we have knowledge available on Google, so I could see what a motherboard is, the processor, monitor, mouse, things like that. But to use it actually was not my cup of tea. So I asked my son that तुम जो सीख के आते हो मुझे बताओ. बोले आप भी ज्वाइन कर लो. मैंने कहा सब हंसेंगे भाई, तुम जाते हैं वहां पे, मैं गया तो वो लोग हंसेंगे. I'm a misfit for that, but तुम सीख लो फिर मुझे सिखाना. One day he said okay. बड़ी खुशामद करनी पड़ती थी, वो सिखाने के लिए तैयार नहीं थे. तो मैंने एक बार उसको बोला मेरे साथ बैठो बात करो. उसने बोला साहब आप ऐसा करो कि ये माउस है और राइट क्लिक करो. तो मैंने एक क्लिक किया. बोले ऐसे नहीं, डबल क्लिक करो. मैंने एक क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक किया. इतना गैप नहीं होता, जल्दी जल्दी डबल क्लिक करो. I tried once, twice, but it didn't work. And he gave up. He said कि आपसे नहीं होगा, रहने दो. अब वो जो शब्द थे उसके, आपसे नहीं होगा, वो चुप गए वो. कभी कभी हाँ ऐसी आग लगती है कि वो फिर आपको, आप में बड़ी ऊर्जा भर देती है, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है. तो उसी वक्त ये हुआ कि मेरे किसी मैं टेरेस पर पेड़ों पे पानी दे रहा था, गीला तो हो गया था फर्श, मैं टाइल पे स्लिप कर गया और मेरे फ्रैक्चर हो गया. तो 1 महीने के लिए पट्टा बंद गया. तो मैंने फिर एक लैपटॉप खरीद लिया अपने लिए, क्योंकि नॉर्मली आप देखते होंगे कि बच्चे अपने पीसी को बहुत पर्सनल समझते हैं. दे डोंट वांट अदर्स टू एक्सेस दैट. पर्सनल कंप्यूटर है वो, पीसी है. तो आई हैड नो एक्सेस टू हिज कंप्यूटर, ऑल्दो आई बॉट फॉर हिम. सो देन आई बॉट अ लैपटॉप. देन मेरी एक भतीजी उस वक्त यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रही थी. तो वो अक्सर वीकेंड पे हमारे यहाँ आती थी कि मैं मेस के खाने से ऊब जाती हूँ तो यहाँ आके खाऊंगी. देन वन डे आई सैट विद हर एंड शी वेरी पेशेंटली टॉट मी कि देखिए अब ऐसे होता है, ये होता है. और फिर उसने ये बताया कि हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में एक विंडो होती है जो आपसे बात करती है. तो अच्छा, फिर ट्यूटोरियल्स होते हैं, और उसने बेसिक बता दिया और बाकी चीज ये बता दी कि कैसे सीखना है. मतलब ये जानना था कि कैसे सीखना है, उसके बाद तो सीखते चले गए मेथोडोलॉजी. और देखिए यदि उस वक्त नहीं सीखा होता तो आज हम इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाते. तो ये बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में तो और भी जरूरी है. मैं अपने वो साथी
जो आज भी कंप्यूटर से बहुत फ्रेंडली और फेमिलियर नहीं है, उनसे कहना चाहूंगा कि जैसे लक्ष्मण जी मोबाइल पे हमें ट्रिक्स सिखाते हैं, ऐसे ही हमें कंप्यूटर पे भी सिखाएं, लैपटॉप पे भी सिखाएं, टैब पे भी सिखाएं। आने वाले समय में हमारे सारे काम ऑनलाइन होंगे और एक क्लिक से होंगे, आसानी से होंगे। तो ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और इस लर्निंग के पार्ट को मैं सबसे ज्यादा महत्व दे रहा था कि अभी हमें टेक्नोलॉजी के साथ और जितनी सारी चीजें बदल रही हैं उनके साथ कदम ताल करके चलना है और पीछे नहीं रहना है। That's it. Thank you. That was very well summed up, कमल सेठिया जी, बहुत सही बताया आपने कि to be in line with what is expected of this current scenario, ये टेक्नोलॉजी का जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है. And I've seen people who learned, who hated computers. For example, my own eldest brother, he never liked it. He used to work for RBI and he never liked it. But once his son was in the US and gone, so he had to jhat maar ke usko so that he could connect with him. Mail exchanges ho sakti thi, you know. It starts from all that. But there are other challenges that comes along with the technology, which of course not necessarily we should worry too much about it. But for people in that line, have to constantly update themselves and actually run. You know, they say web beer. I'm talking in 2000 2001 time frame, and this entire web thing was pretty new at that time. And web beer was supposed to be only 3 months. Every 3 months you have to have a new version of the software. This was the expectation कि आप भागो दौड़ो यहाँ तक कि you get burnt out in the IT industry. That was the unfortunate part. Which is why I quit my corporate life at the age of 55. Because I wanted to live and not just exist. There was a so that is what I did in 2011. तो मैं बोला बहुत हो गया, अभी पिछले 12 साल से मैं जी रहा हूँ. I can proudly say that. Okay, now I would love to listen to anybody else who has got to say about what can we learn at this stage of our lives. Technology, we have to be in touch. ये तो बताया ही है. एंड लैपटॉप के बारे में आपने बताया, तो आजकल फ़ोन से इतना सारा हो जाता है, लैपटॉप की कमी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है. दैट इज़ माई, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विथ लैपटॉप. एंड आप सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम. द पॉइंट यू मेड, जैसे कि जूते उतार के आप अंदर गए. व्हेन आई यूज्ड टू रन द डेटा सेंटर in the early 80s, it used to be like that. It was a huge, some 800 square feet area. We had a huge central processing unit. There was a printer area. There was, tape drives and artificial flooring, everything. And अंदर मंदिर जैसे हम लोग जूते उतार के चलते थे अंदर के. And started, I used to call it IPL, that is the initial program loading. वो 3 जगह पे बटन दबाना पड़ता था. Then the computer would start. And before we started the computer, हमको AC on करना चाहिए पड़ता था, like to get it into the temperature of 22 degrees minimum. तो ये सब काम operational level पे भी बहुत कुछ किया था to ensure that data center is in running condition. So वो अलग तजुर्बा है. Yes, I would like to hear Chandish ji, welcome. Sanjeev ji, Bharadwaj ji, welcome. Khauri Kumar, welcome to you too. Then मोदी जी एक हैं, मोदी के मतवाले राही हैं. तो anyone who would like to speak, maybe you can raise your hand and go ahead. Sir, may I speak? हाँ संजीव जी बताइए. You are for the first time here? नहीं, सेकंड टाइम. वो लास्ट टाइम बुक्स वगैरह का कुछ जिक्र हुआ था ना. हाँ. तो मैं बीच में बाहर चला गया था. ओके. तो मेरा ये है कि जो जैसे अभी सेठिया साहब ने कहा कि जो इन्होंने कंप्यूटर लर्न के बारे में बताया, मेरा है कि अभी क्या है कि अपन कोई किसी को देखकर या किसी से इंस्पायर भी हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है एक्चुअली, व्हाट वी फील गुड फॉर अस. वन इज नीड टू हैव, वन इज नाइस टू हैव. यस, जैसे आपको सिंगिंग अच्छा लगता है या बुक रीडिंग अच्छा लगता है या घूमना अच्छा लगता है या गार्डनिंग अच्छा लगता है, व्हाट एवर यू लाइक, फर्स्ट तो यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है. राइट. अकॉर्डिंगली आप उसको फील करो, क्योंकि आपको फील गुड जब ही होगा
जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप में, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की हैबिट्स होती हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं। मेरा आवाज आ रहा है सर सबको? बिल्कुल आ रहा है जी। हाँ हाँ, मोदी जी के यहाँ से और भी आवाज आ रही है। आई थिंक वी शुड। यस यस, आई थिंक समवन। हाँ, या नाउ नाउ वी आर फाइन। ओके ओके ओके। तो मेरा यही पॉइंट था कि जो है हमको जो अच्छा लगता है, जैसे अभी मुझे घूमना बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों। पहले मैं नहीं इतना जा पाता था, निकल पाता था। तो अभी जैसे रिसेंटली मैं कल ही वापस आया हूँ। आई एम फ्रॉम, मतलब मैं जो जैसलमेर और जोधपुर घूम के आया। लेकिन हाँ, जिसने भी सुना उसने कहा कि अरे ये तो कितना इतना गर्मी में गए, बट आई रियली एंजॉयड इट। फैंटास्टिक। आजकल क्या है कि अपने अगर थोड़ा सा प्लान करें तो सुविधाएं हैं अच्छी, जो है गाड़ी में जा सकते हैं मतलब। और मैं वहाँ लोंगोवाल बॉर्डर तक गया, पाकिस्तान का, जहाँ पे जो बॉर्डर मूवी बना है ना, जहाँ पर बड़ा अच्छा है, आप उसको फील करो इमोशनली। वी कैन टच दैट इवेंट जो हुआ उस टाइम, जो हुआ। तो जोधपुर भी मैं घूमा, वहां पे अपना जो हेरिटेज है उसको अपन करें। तो एक टाइम प्लान करके हम कर सकते हैं। घूमना हो गया, रीडिंग हो गया, एवरीथिंग। मेरा यही कहना है कि जो हमको अच्छा लगे वो हमको एंजॉय करना चाहिए लाइफ के साथ। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे आप अभी भी काम पे जा रहे हो, रिटायर्ड हो कि? नहीं, मैं रिटायर हो गया हूँ 2.5 years बैक। आई वाज चीफ मैनेजर इन पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके। रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली, माय हेड ऑफिस देयर। अच्छा, नहीं तभी आप रिटायर करते करते आपने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा? हाँ सोचा था, सोचते थे कि, क्योंकि पहले छुट्टियों की बहुत प्रॉब्लम होती थी। इतना मिलता नहीं था सफिशिएंट छुट्टियां वगैरह। वो हमारा जो बैंक का LFC वगैरह होता था, LTC जिसको कहते थे, वो भी कंपल्शन में जाना पड़ता था कि लैप्स नहीं हो जाए। इतना टाइम नहीं मिलता था कि जो है कंफर्टेबली जाए। अच्छा अच्छा। तो मेरा मेन जो था, मेरा घूमने का ही था एक्चुअली। इस साल मैं बहुत घूमा हूँ। हाँ, यू आर एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स, वंडरफुल। यस 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 यस। बहुत अच्छे। मैं वेलिंगटन गया पीछे। जो मेरे सन इन लॉ एक्चुअली आर्मी में है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो हाँ कुछ हाँ। अरेंजमेंट वो कर देते हैं। तो वेलिंगटन एक जगह नियर ऊटी, अगर आपने है, ओके। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। फिर पौंडीचेरी गया, पौंडीचेरी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। फिर वहां पर जो सदगुरु का आश्रम है, वहां पे मैं रहा 2-3 दिन के लिए। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट दिस इज ब्लेंडिंग वेल विद आवर डिस्कशन ऑफ लास्ट वीक्स टॉपिक व्हिच वाज ऑन वेकेशंस। हाँ हाँ। स्पोक अबाउट वेकेशन की कहाँ क्या कैसे, इट वाज वेरी नाइस। सो इट इज। तो डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मतलब होता है। जैसे मैं वो अरविंद आश्रम में गया पौंडीचेरी में, तो हाँ, उनका अलग वो है। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लग रहे हैं मतलब लाइफ में, क्योंकि टाइम भी है। वो KBC में कहता है ना, आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है। तो हमको कोई 2 दिन या 3 दिन जितना अच्छा लगे, वहां पे हमको रुक सकते हैं और हाँ उसको हाँ। फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू संजीव जी, अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। जी जी जी। हु नेक्स्ट? हाँ जी, अखौरी कुमार, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यू वोंट बी हर्ड। हाँ, या नाउ यू आर ओके। यस यस। तो अभी पौंडीचेरी की बात हो रही थी तो याद पड़ गया हमको भी। पौंडीचेरी एक्चुअल बहुत सुंदर जगह है। मेरी बड़ी बेटी वहीं रहती है। तो जाड़ा के समय में हम मोस्टली कोशिश करते हैं 3-4 महीना वहीं रहो। ओह। जाड़े के समय में, हाँ, जाड़े के समय में एक्चुअल में बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना से। यहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है। तो ठंड के समय में हम पौंडीचेरी चले जाते हैं। वहाँ का मौसम इतना सुंदर है, एयर क्वालिटी इतना सुंदर है, रियली। मत पूछिए, बहुत सुंदर है। वहाँ का एक अरवेली विलेज है, वहाँ घूमने का मजा और है। वहाँ पर एक बना हुआ है थे ग्लोब, जिसमें जाकर लोग शांति से बैठ पाते हैं, ध्यान करते हैं। वो मुझे बहुत आता है। जब भी जाता हूँ तो एक बार जरूर वहां जाता हूँ। उसके बाद गांधी बीच है, बहुत सारे बीच है, ये लार्ज नंबर ऑफ बीच। ओके। तो हमें बहुत अच्छा लगता है वहां पर घूमना और करना। तो फिर अभी जुलाई अगस्त में फिर जनवरी तक जाकर वहां रहेंगे। अरे वाह। तो हाँ। यू यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, और आपने कहीं सीखा कि वहां पे ऐसे होना? वाज इट पार्ट ऑफ योर लर्निंग और यू जस्ट जनरली वेंट देयर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन बी लर्न एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। ये टॉपिक है हमारा आज का। हाँ,
वहां जाकर मैंने वहां का इन्वायरमेंट देखते हैं, वहां का कल्चर देखते हैं, बहुत लगता है। वहां लोग कुछ कम्युनिटी है जो फ्रेंच कॉलोनी है एक, हाँ हाँ जहाँ पर पता नहीं चलता कि हम इंडिया में है। वहाँ एक फ्रेंच इतना नीट एंड क्लीन रहता है ना कि, और उसी बीच एक आश्रम, अरविंद आश्रम है। जी। तो वहाँ हर आदमी को जाना चाहिए एक बार कम से अरविंदो कम। का है ना? अरविंदो अरविंदो घोष का अरविंदो, आश्रम है। देखा। हाँ, हर आदमी को जाकर वहां कम से कम आधा एक घंटा बैठने से दिल को शांति मिलती है, तो पीस जिसको कहते हैं। अच्छा। तो ये वहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है वहाँ घूमना। वैसे हम अपने सर्विस पीरियड में हमेशा घूमते रहते थे हाँ कहीं लग में। चारों धाम मेरा विजिट हो चुका है, इसलिए अभी नहीं, वहां से आपने सीखा क्या है कुछ? एनीथिंग न्यू यू लर्नड एट दिस एज? बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू लर्निंग एट दिस एज। घूमने से हमको ये पता कि इंडिया में कितने तरह के कल्चर हैं, कितने आदमी का व्यवहार क्या है, वो हमको पता चलता है। कि हम बिहार में लोग बैठ कर आ जाते हैं बिहारी हैं, बिहारी हैं, बिहारी हैं, लेकिन बाहर घूमने से पता चलता है कि दुनिया में कल्चर क्या है। इसलिए मेरा व्यू है कि हर आदमी को कम से कम बाहर का एटमोसफियर, कल्चर को जानना जरूरी है। इसलिए घूमना एक अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चीज सही। रखना चाहिए। घूमना। बस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम क्या? अखौरी? अखौरी को? अखौरी मृत्युंजय कुमार। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रमन जी ने हाथ ऊपर किया है, सो आई वुड लव रिक्वेस्ट रमन जी टू air his views on the topic that he has initiated. Yeah, yes, yeah. The point is, as seniors, we do have a lot of time in our hands. At least in my case, I will say, I got a lot of time in my hands. And naturally, the anxiety, or rather, the inquiry is, how useful can I spend this extra time I have in my hands while I am not eating or sleeping or doing idling away. Of course, entertainment is there. We enjoy walking, keeping fit, and all that. But on the topic of learning, I think some sort of physical exercise is a must. It is not something you pick up for learning. You must have it because fitness in our age is very important. And pranayama, yoga, or exercises, or even evening or morning walks, these things, what I intended as learning is you pick up something to satisfy an interest, to know something which is not essential, without which you cannot survive with that, not that kind of thing. So what I do is I have got a curiosity in almost everything. Recently, I'm interested myself in reciting mantras, Bhrigu Brahmanandavalli, Mahanarayana Upanishad, this sort of thing. And I happily found that there are very learned teachers who are Ganapadigal. They are called in South India, they are called Ganapadigal because Ganam is a way of learning where if you take 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This way they learn the Vedas word by word, letter by letter. This is a very difficult task. Of course, we cannot learn Ganam now. It is too much because that course takes about 10 to 12 years to learn. Okay. But this Ganapadikal is teaching you how to recite mantras. Yeah, we have done something Rudram, Samakam, Aruna Prasnam, Narayana Upanishad, Bhrigu Brahmanandavalli, these things we have already done. So learning means this interest in recitation and also some philosophy. That's why I also indicated philosophy as one of the topics for discussion. We need not abhor philosophy as long as you don't want to throw the other man's God out of the window. As long as you don't do it, you are free to discuss the relationship. What is God? What is man? What is man's relationship with God? These things also. This is also a process of learning. I am interested and I am learning bit by bit recitation of Sanskrit mantras and reading the Advaita philosophy.
Thank you. I think you are a true inspiration for many of us, Mr. Raman. I must say this because whatever little I have tried to do in the space of reading or maybe trying to chant mantras and all, I'm not. I feel I'm very, very incapable because that words, that tongue twisters, as they say in English, I mean, it's just not coming. No, it is not that. I am far worse than you when I started. Definitely, but this comes. I know the tune of the mantra, but the words don't fit in. It is not that. It is not something like karate where a certain physical activity is required. This thing is only a bit of concentration, perhaps some training with the tongue that comes in the course of time. So you start erratically, you start horribly, but in course of time, you will acquire some sort of efficiency there. It is not, see, when you hesitate, when I have a negative feeling about anything, the tendency is to just to push it out of my field of vision and forget, oh, it is not for me. Rather than, instead of that, if we just take an active, all right, I will learn to recite mantras badly. And that takes you to some distance. Thank you. Yeah, I understand, but I just wanted to point out, Setaji, I'm coming to you. My point was this, some of this verbose stuff, it comes in very quickly, fast, thick and fast. Like even in some Hindi songs, like for example, this Kavali of Amar Akbar Antony. जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे किसी, these things, because I knew it from those days, I'm still able to do it. But if I try to learn something new now, I struggle. I'm finding it extremely difficult because I'm trying to. There is a program that is coming up, and then I'm learning some songs which have a lot of Bannade songs, especially with a lot of verbose things. I'll just tell you about it. Is like, oh, you have a ledger of songs. बीन मृदंग झांच जब बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया गोपी के संग रास रचावत नाचत जावत ताता थैया ता थैया. These things don't come out so easily. It has come now. It has come now. So it's only a question of time. That is what I am trying to say. You start with erratically, and in course of time you refine. That is the point. Anyway, I think it takes a little longer at this age and stage to reach your level of perfection. Philosophy and mantras are the two fields in which I find learning is interesting. That is the point I wanted to make. Wonderful to know that. You really, truly inspire, definitely, for as far as I'm concerned. Kamalji, you wanted to add something to the current? Yeah. I'll just take a minute. That what Ramanji has said just now, spirituality and philosophy, these are two subjects which really fascinate us seniors. I just wanted to know if the pronunciation is not correct, तो मंत्र का कुछ असर गलत हो जाता है. तो मंत्र का उच्चारण बहुत शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए. यदि रमन जी हमें सिखाएं तो हम सीखने को तैयार हैं. No. I would like to, on this also, I have some ideas. I won't have an authority for this. Some Muni said this, or some Guruji said this. But I have my own perception in this. We are talking about mantras which happened at a time when there was no script. The written word was not there. Only the spoken word and the ears with which you listen to the spoken words were the only two instruments to retain mantras. So at that time, they created so many rules about it. You have to do it correctly. If you make an error, you will go to hell, even this kind of thing. It will have an opposite effect. It will have an adverse effect. All the things were said because they wanted such of those students to give their maximum 100% attention to learn it correctly and to recite it correctly and to pass it on correctly.
That is why this concept of Ganam, which is saying the words this way and that way, up to down to up, this, that. All this came because they wanted a regimentation so that the student will absorb it accurately. Now we have the mobile screen on which you can see PDF mantras. You can listen to it in YouTube. So the process has now simplified. And we can simply push away these things. You see, in essence of Advaitic philosophy, they don't speak about hell and heaven at all. They don't speak about Papa and Punya. That is at the highest level of philosophy. They put emphasis only on self-realization. They say, so even this Papa and Punya on these 7 stages of hell and the 7 stages of heaven, or whatever, Amrit, Vaikund, Kailash, what have you, all these were devised to imbibe certain social discipline and also some accuracy in learning. That is the way I look at it. If you want me to quote an authority, well, I don't have it. Thank you. Okay, Subramaniam Vishwanathan, my friend. No, just wanted to add on to what Ramanji was telling about mantras. Okay. Even as Lax, you were telling that I was very, keeping away from chanting complicated mantras and all that. And right from childhood, I knew a little bit of shlokas which my mother had taught. So my daily routine used to be after taking bath, say those few slokas, which will hardly take 5-10 minutes. Okay. But then it became part of my system. So even one day I cannot do without reciting those slogans. Okay. Now recently I got interested. I mean, I was inducted by my friends. I mean, our friends, mine and Lax, our school friends, school batch friends. They invited me to join a session with an elderly gentleman. He is actually a technological professional. He is a chemical engineer, UDCT studied, and he is a consultant in industries and all. But he is now quite elderly, and he was deeply into all these spiritual chantings like Rudram Chamakam and a whole lot of suktams, which they call Purusha Suktam, Pavamana Suktam, Narayana Suktam, Sri Suktam, Durga Suktam, and whatnot. Okay. So he was very passionate about all those things. And so when I expressed my interest, he really talked to me and found out whether really I am interested or I am just joining for time pass. Then I told, no, I have some spare time and hand and I would like to learn it. And my intention while joining was not to, go into, highly spiritual or I didn't bother about. I just for the heck of it, I wanted to try it out. Okay. So, and I joined and it was started during the COVID period and it's extended for 1.5 years. Okay. It is still going on, but I had to stop due to other reasons. Okay. But I found it was a very, very, energizing experience. Okay. I don't know whether I have attained any spiritual benefits out of chanting those. But as Ramanji said, that it creates a discipline within you, because he was like a schoolmaster. This Rudram Chamakam especially and some of the suktams, they have the swarams. Some letters you have to pronounce in the upper swaram, some on the lower swaram. Okay, there are 3 levels, -1, 0 and +1. So you have to change your swarams as you recite. And he was very particular about it. One wrong swaram, he will pull you up. So it created a self-discipline and you will be always on his toes when you are reciting in front of him. Okay. Because you had developed that respect and reverence for him. So even if you wanted to take it lightly, you are not allowed to take it lightly. So when reciting before him, you are like a student and it had its tremendous benefits. I really enjoyed the process of chanting, learning,
first I like Lax told that I thought it is an impossible thing for me to learn all these complicated Sanskrit mantras. But now looking back, if I pick up a Rudram Sapkam book, I am very casually, I am very effortlessly, I am able to recite. And whatever those 10 minutes of recitation, it has a physical effect first rather than psychological or spiritual. It regulates your breathing. I found out that it regulates your breathing. It sets a rhythmic breathing pattern in your respiratory system, and it does wonders to your circulatory system also. Okay, because it requires a physical effort to pronounce those words, and it does develop a positive energy. So this is what I want to. So I mean, even if you want to go into slokams and all, I mean, you need not have very high ambitions or spiritual ambitions and how to clear your papa karma and how to get in punyam. No. Just day-to-day life, it helps you. It helps you regulate your physical systems and mental balance, composure, and intellectual clarity. This is what I learned from learning from that gentleman. So I just wanted to add on this. Thank you so much. Sanskrit as a language, it has got a sonorous quality, the sound of it. Usually, I am also a reader. Yeah, I read J. Krishnamurti. One of my deep interests is reading J. Krishnamurti. J. Krishnamurti also used to say that there is a majesty to the sound. And if you are able to appreciate the majesty of the sound, that makes you happy. Okay. So we have two gentle ladies who have not spoken at all. So one is Dolly, one is a doctor. So should I go alphabetically, or whoever wants to be the first one? Can't hear you. Okay, Dolly ji, you go ahead. Yes, लर्निंग तो एक प्रोसेस है ही, आप हर एज पे सीख सकते हैं। बहुत से, जैसे अभी कमल जी ने कहा कि उन्होंने कंप्यूटर सीखा और उनको अपने लिए बाय करना पड़ा बिकॉज बच्चे को लगता है वो उनका पर्सनल है, और एंड इट हैपेंस। लेकिन इस एज पे आके सर्टेन कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ चीजें हम सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर को फैमिली कंप्यूटर नहीं कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यस, पर्सनल कंप्यूटर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब लाइक म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मेरे ब्लड में है, बट इस एज पे अगर कोई मुझे कहे कि आप अलंकार सीखिए, तो मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, नाउ आई कांट। तो कुछ चीजें हमें हमारी बाउंड्रीज भी दिखाती हैं कि भाई इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन लर्निंग एक प्रोसेस है, हम बहुत सी चीजें बच्चों से, लाइक प्रोनाउंसिएशंस है, आप बहुत से वर्ड्स बच्चे जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हमें उनसे सीखने को मिलता है, बिल्कुल डिफरेंटली वो लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों से भी हम सीखते हैं बहुत सी चीजें। हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, कोविड में हमने बहुत सी चीजें सीखी, लाइक कुकिंग भी सीखी। इवन मैंने स्टिचिंग का मुझे शौक है, लेकिन मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैं जस्ट देख के ही सीख लेती हूँ कि सामने वाला कैसे कर रहा है, तो आई कैन मेक इट। ये पर हाँ, एज से रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी एज पे कुछ भी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, आपको वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। Somebody is talking. No. Yeah, it's okay. No. कोई और बोले आप? Sandesh ji, आपको अनम्यूट कर लें। Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah.
I was thinking Dolly ji still wanted to continue. There was some disturbance, so she. Would you like to? No, carry on. Yeah. If you want to complete what you have. No, carry on. I know. Yeah, she was just, so that's why I was waiting. Just carry on. Yeah. I was so inspired when I heard Raman sir and Vishwanathan sir speaking about mantras. Yes. So how it is useful in daily life. My small experience, most of my former colleagues, they used to complain about sleeplessness at this age. So my simple technique is when I wake up, I just start chanting within. I don't know when I go back to sleep. So I have a solid 7 hours sleep, to be honest with you. And the full day I'm extremely active if I have my full quota of 7 hours of sleep. And it's only this I do. I keep chanting. I don't know very many big shlokas or anything, but I felt there was a lot of substance in what they were mentioning, how useful it is in daily life. And when Dolly ji spoke about COVID, can I take a couple of minutes telling you about how I retired? Please, give you your time and our time. Yeah, this was in 2020. I retired. So March 23rd, lockdown was declared, and I was heading a central government research organization. I was the director, and everything was halfway through. In the sense, huge equipments, orders had gone, the equipments had reached halfway. It was to go back. I had to respond to the council why expenditure cannot be done. And before retirement, I had to complete the research advisory committee meeting. I had to complete all India coordinated research project meetings. Nothing was done. And then that time, no online meetings also. That was not at all there in our system. So one meeting, our director general called all the directors. We have 100 institutes throughout the country. So I was in Bangalore. So on that day when we were attending the meeting, I just asked him, sir, can I hold all my institute meetings wherein I have to call all my partners from different parts of the country online? Then I could see the other directors laughing and, mocking at me. I could see because all their faces were visible. So I was upset, of course. And we are very few women directors. I think at that time, out of 120 directors, we were only 3 women directors. So you can imagine the kind of situation I was in. But then I could hold all the meetings during this. There is some whiteboard coming. Somebody has gone sharing screen mode. Somebody has done it. Anyway. Right. Sanjeev Bharadwaj or somebody. It's okay now. So, yeah. So after, so I was the first one to hold all my institutional meetings online, and I could retire peacefully, and but went through so much of tension during those 3 months from March 23 to May end till my retirement. And at that point of time, I thought enough. I am not going to do anything related to subject. I'm only going to relax, enjoy, nothing else. That's what my mental state was when I retired. But then it was that time I got into the Seniors Today platform. And I have 2 separate groups of dancers and singers where I am a participant. So already we were there for the last more than 3 decades. We are together, senior ladies dancing and singing and all that. So, okay, I thought I'll get into that. I won't do anything related to subject. But to be honest with you, video freeze हो गया क्या? Who's mine? चल रहा है? No, it's no freezing. It's fine. So that again, I have to tell that. So after that, just about 2 months post-retirement, so many invitations for subject talks, to be research advisory committee member. And I then felt whatever little I know, I should share. I should be a part of what I have been doing all these years. Otherwise, it's a waste. And then I also wanted to sing and dance.
So what I want to tell you is what I learned is to balance, to enjoy at the same time, enjoy the sharing process, enjoying being part of official meetings, enjoying being part of a learning and teaching process. So that is one thing I learned. And also I refuse to get upset for small things. I feel I have learned to accept people and situations as it is. Okay, this is how it is. Let me just wade through the situation. Let me just accept people as they are. So this is the second thing I have learned. And learning from real youngsters. See, today my video did not freeze. That's why I didn't speak in the beginning. I think you must have observed all our music sessions. When I start speaking, my video gets frozen. Then the whole system hangs and only my voice is heard. Then I have to go out of the Zoom and come back again. So I had discussions with Archana and Firoz, and a long discussion. Archana sent me, because my laptop, there is some issue with the camera. So finally, Firoz told me, you buy an external camera, ma'am. Long discussion I had. Thank you, Firoz. I bought the external camera. I fixed it today. Today's the first meeting I'm holding with the external camera, and I've not frozen. This is the lesson learned from the real youngsters compared to us senior citizens. Yes. Hats off to all the youngsters, and learning to be happy and also officially being engaged. Thanks to all senior citizens. You are like, so very close to my heart now. The whole group, Dolly ji, almost every week, twice, thrice, I meet online. So it is really enjoyable. Kamal Seth ji and Lax sir. And today, Raman sir, all of them, Ajay Roy sir, he's so active in the group also. It's almost like I've been knowing them and meeting them for the last decade. It feels like that now. So true. Yes. So I feel these are the things I have learned post-retirement: to balance, to accept. Thank you, Lax sir. That was really well articulated, and I loved to listen to this point where you said, I have learned to accept things, which is a very, very important component or criteria in our life, so because we can only control the controllables. What is beyond you, what is the point of getting upset? I think that another point is not to compare yourself with others, no regrets. These are some things that I try to follow, and it works, and it is good in general. Sir, Mr. Ravi Gandhi wants to speak. Yes, everyone will get. Who is? Okay, go ahead, Ravi Gandhi ji. Yeah, good evening, sir, and the respected group. I retired in 2020. All Pune-based companies retire you at 58. So I retired at 2020 in June. However, I was lucky enough to continue on some kind of work about 2 years. Now also I am a consultant, but as rightfully heard during the process of this group, everybody wants to now be happy over 40 years of work you have already done. So I am finding those small nuggets from in seniors today of how to, do what. I have not played badminton in 40 years. I went and played badminton the other day. And I'm learning to sing. I love to sing. I didn't know somebody, while I was going in a taxi, the taxi driver told me, you sing very well, sir. So unfortunately, I pay him 100 rupees more as a tip, but that's okay. But you get good compliments. And now that the children are more or less settling down, and they're too busy with their own lives, we're trying to find something to do with our life, which was more controlled by the job or by particular needs that the children are growing up, or you have to earn, or those kind of needs. Now those needs are there. There is an issue of you do keep yourself busy doing something or the other. As rightfully put, I try and help the juniors. The juniors are willing to listen to your 40 years of experience in sales, and they are very entrepreneurial lot. They want to do more and more. So even on the work life front, I try and say something to them, to tell them to slow down and enjoy their lives, have
have time space their careers and ensure that they don't get stuck in or get into a limbo on particular only career or like that. So things are now I would say in a space or in a frame where I am slowly trying to get into a space where I'm quite comfortable. I'm enjoying. I want to get into the slowness of motion instead of the fastness of the corporate world. So regarding religion and spirituality, I am more religious person. Spiritualism is still something which I want to. I do now listen to a lot of gurus on YouTube, and I try and get the meanings. Earlier, it's to always be ritualistic. I love Lord Ganesha. I sit in front of him in early morning, and somehow I do get a lot of wonderful vibes when I sit, and I get a lot of good answers to all my problems. That's early morning. If I get up at 5:30, my mind is clear. I sit in front of Lord Ganesha's statue and then keep looking at him, and I understand a lot of things better. So, losing parents early is a very difficult thing which I had to undergo. But fortunately, I married the right person who supported me for all the years, and despite having a bit of illness and other problems. Well, here I am at 61 and grasping life with better understandings, enjoying the process, thanking God every day that today has been beautiful. Understanding gratitude is the only thing that can get you far. So that's my story, and that's the way I look at it. Thank you, Raviji. That was very well summed up. We have Suresh Adhyari, who has been smiling all along. Like to also hear you. Since I'm here for the first time, I said let me just get a grasp on how things happen over here. Right. I retired in 2017, which now makes it about 5.5 years. I'm age 70. I live in Mumbai. I'm just taking a couple of points which were made along the way. One is about the knowledge and the learning that you need to have, and one is the nice to have. And when it comes to the need to have, yesterday we had a session on artificial intelligence, which was conducted by the Summit Agency, and there was this young lady who was telling us how to use Google Lens and Google Translate. And then she mentioned there was a one-day program on internet-based fraud. So today I contacted her, and they are holding it on 18th. And yes, you need certain knowledge to keep yourself afloat in today's world. And I think that part of learning is important for all of us. Okay, because that's what's going to keep us going. And it's not just you're going to get left out because you don't know, but there's a chance you may get hurt because you don't know. And there, I think I would like to draw the line and say that there are certain parts of knowledge or learning which is essential, and every one of us needs it. The degree to which it can vary because of your amount of work that you do on the internet. But then this, I think, is something which is an essential part of learning process today. The other part is like somebody was mentioning about chanting. I thought I knew the Gayatri mantra in out, but then I learned the hard way after attending 21 days chanting session conducted by someone from Chinmayananda Mission, that the chanting has got there are certain ups and lows and highs which you have to take while you chant the mantra. So last month I attended 21 days of that, and now this month currently it is always from 1st to 21st. So this is something which I am also doing more from the point of view that it develops you, it lifts you up, it makes you feel better. And I think I will take a point which the lady mentioned about
chanting helping you sleep. I have gained a lot of peace of mind after I started this process and making an effort to chant properly. So this would be my 2 contributions today. I'm still learning the ropes of how things move in this group, but this is what I would like to contribute today. Excellent, Sureshji. I think there is no, as I mentioned upfront, that there is no structure. It's free flowing. My request, I have a request from you. Yeah. Would you recite Gayatri Mantra just once, the way it should be? Oh, no, I've not yet reached that stage. I would not like to try it out and chant something wrongly. I'm still picking up the lows and highs, and it will take me at least another 2-3 months. This is being conducted every month. They have just been through 1 month. Today is the 2nd month. And now once I've reached a stage where I feel that, yes, I can get it right, then maybe I'll chant. But today I would not like to risk it. Thanks, Sureshji. I think the one point you made triggered some other thoughts in my mind. When you said that, if you don't know, you may get hurt, is what you said. And, 4 ways of looking at what you know. I know what I know. I know what I don't know. I don't know what I know. And I don't know what I don't know. The 4th one is the complete disaster statement. When you don't know what you know, you are in trouble. So, I mean, you took me back to some gyan that I got in my bachpan. I just make a share. अजय जी, आपका आज हमने बात सुना नहीं है. अनम्यूट. थैंक यू. हाँ जी. गुड इवनिंग सर, सबको शुभ संध्या. शुभ संध्या. अभी जैसे डॉक्टर कमल सेठिया जी ने, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूँ सर कि लर्निंग प्रोसेस हमारा तो होना चाहिए और ये चलता रहेगा लाइफ लाइन, इसका कोई एंड नहीं है. तो उनकी बात से जो सहमति मेरी ये है कि हम लोग देखिए म्यूजिक वगैरह के हमारे खूब सारे वो चलते रहते हैं, कभी कैरियोके पे और आपका स्टार मेकर, ये सब कुछ जो सीखते रहते हैं हम लोग. लेकिन इस पर्टिकुलरली जैसे रामन सर की नॉलेज है और विश्वनाथ जी की, उनकी सबकी इस नॉलेज पे हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा अपना ही, जैसे आज आपने ये ये लिया आपने कि ऐसा कुछ लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए. तो लर्निंग प्रोसेस जैसे गायत्री मंत्र के लिए ही रामन सर बताया, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो ब्रॉड एंड बॉटर हुआ हूँ. हमारे फादर आर्य समाजी थे, स्कूल से पढ़े हुए, और वो घर में ही सारे हवन वगैरह खुद ही करते थे, लेकिन स्टिल आई कांट प्रोनाउंस प्रॉपरली. तो हम लोग ऐसा एक इसके साथ साथ जैसे लर्निंग क्लास हमारी इसकी होती है म्यूजिक की, इसकी ये भी एक हो जाए तो मैं तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. कमल जी ने जैसे कहा, और हमारे जैसे और भी अभी नए नए हमारे बड़े अच्छी अच्छी नॉलेज आई हैं. संदेश जी तो पुराने हमारे हैं, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनकी नॉलेज इज वेरी वास्ट. और आपकी तो है ही है सर, लक्ष्मण जी के भी साहब. तो ये सब सीखने का हमें अच्छा मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे. ऐसा भी होता है ना, कभी हम लोग को पता भी नहीं चलता हम क्या सीख लिए. हाँ करेक्ट, वही कह रहे हो ना कि ये जो सेशन होते हैं, जैसे अब ये गुफ्तगू वाला सेशन मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगता है इसमें कि एवरी टाइम यू गिव ए वेरी गुड टॉपिक. कभी जैसे आपने ट्रेवलिंग का दिया, कभी हैप्पीनेस में, वैसी म्यूजिक तो हमारा एक है, वो पैशन है हम सबका, हम लोग सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और म्यूजिक के थ्रू ही जुड़े हुए हैं. बट इस टाइप के जैसे आपका आज ये टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा लगा. ऐसा एक लर्निंग का भी हमें, जैसे रामन सर है, विश्वनाथ जी है, हमारे को अगर ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ गायत्री मंत्र है, जो भी मंत्र है जो हम लोग करते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि इवन योगा के लिए भी कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट, आज का टॉपिक का श्रेय कमल जी को जाना चाहिए. हाँ जी, हाँ उनका टोटली एग्री सर. और जैसे योगा के लिए कहते हैं कि अगर प्राणायाम आप प्रॉपरली नहीं करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है. सेम हमारा ये है. अब गायत्री मंत्र को कहते हैं कि आप ना पढ़ो, खुद ना प्रोनाउंस, खाली सुने,
प्रॉपरली, उसका भी बहुत कहते हैं पूरा उतना ही इफेक्ट होता है जितना आप उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण हो जाए तो उसका डबल हो जाता है उसका इफेक्ट। तो वो हम चाहते हैं कि आप हमारे को ऐसा शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर गलत प्रोनाउंस करने से गलत इफेक्ट होता है। सब व्हाट मैटर्स इज योर नो भाव। सो अगर आप सिंसियर है तो सी नोबडी इज एक्सपर्ट हियर, ओके। नहीं ठीक है। So the intention, it's not that if you pronounce wrongly it will, at least I don't believe it will have a wrong effect or something, as long as your mind is devoted to that is agree sir, वो तो अपने जगह है ही है, डिवोटेड तो है। आप किसी भी कर रहे हैं, आप अपना हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं हम लोग तो। हाँ सही है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कुछ रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होगा ना तो वो हमारी तो जो कहते हैं मीनिंग बदल जाता है ना। कभी ऐसा कुछ आप बोल देते हो, सो फॉर एग्जांपल सुब्रमण्य ने रक्षितो हम, इफ यू पॉज इन द रॉन्ग प्लेस, सुब्रमण्य ना रक्षितो हम बोले तो गया। नहीं ये सही है, क्योंकि एक अपना हमारा जो हमने पढ़ा था श्री सुक्तम, उसमें देयर इज अ वर्ड अलक्ष्मी। अलक्ष्मी मीन्स व्हाटएवर इज अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी दैट यू रिमूव, यू आर प्रेडिंग। लेकिन वो संस्कृत में वर्ड सब जोड़ते हैं ना, तो वो लक्ष्मी हो जाता है। तो so whenever sir was teaching, he made it a point that it is not Lakshmi, it is Alakshmi, okay. So you have to pronounce that. That is right. वो एक चीज अलग है सर ये, लेकिन जो हमारे श्लोक का के लिए यही कहा गया है कि इसकी प्रॉपरली आपको प्रॉपरली करना है। उसका एक मीटर भी रहता है ना, वो मीटर में ये नहीं कि आप बाहर निकल गए तो उसका शायद मतलब बदल जाता है। मतलब मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वही तो वर्ड हो जाता है। Right. You see several mantras are recited only as a sound bite. We don't know their meanings. Here and there, one word or two words we know. We don't know. But anyway, coming back to the subject of learning, we see that there is some essential learning which is necessary for everybody working at a young age. This is digital safety kind of thing. How you don't lose money foolishly by doing something wrong in your mobile or in your PC. This kind of learning, you can't live without it, you have to do it. And then there is learning on which there are certain difficulties for certain age groups or certain class of people. So those handicaps, we have to identify whether it is I am equipped for it or not. And what is within the ambit of my learning, of course, I should pay full attention and learn. And we simply, my intention was to get a bunch of delightful things which you can learn in old age, particularly. Digital safety is a kind of thing which you must learn, whether you are old or young. So that is जैसे आप उस दिन केवी साहब आपने जैसे वो स्मार्टफोन के बारे में ये सब बताते थे। You take pains to learn, you can't help it. If you want to be safe, you have to learn it. That is true. But according to our capacities, we may find certain things which is worth our while to try to learn, like singing or like reciting, like reading spirituality. Listening to lectures is nothing to learn from that. You listen and you then learn. So you have to select the right kind of lectures and the right kind of gurus. We have got all sorts of gurus nowadays. We have some more participants. जैसे आजकल जो गूगल पे सब कर लेते हैं हम लोग, गूगल पे सर्च किया वो तो वो चीज नहीं है सर। जो सामने जो प्रोनाउंसिएट आप करके हमें उच्चारण सिखाएंगे उसका इफेक्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है। But I believe. Okay, that sounds good. We still have a few people who haven't spoken. I mean, some of them have come in late. There is Suresh Vasudev. For a long time he's been there. So if you would like to say something, Suresh ji, please unmute yourself. And अगर कैमरा भी आप ऑन कर लो तो बहुत ही अच्छा। कैप्टन कुलदीप अरोरा तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं इत्मीनान से।
उषा जी भी बाद में आए थोड़े काफी देर बाद। तो ज्ञान शुक्ला जी भी आए हैं, थोड़ा ज्ञान बांटेंगे तो अच्छा रहेगा अब भी। तो हु वुड लाइक टू स्टार्ट अमंगस्ट यू? उषा जी, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट, आपको अनम्यूट करना है जी। वी कांट हियर यू जी। कॉर्नर पे स्पीकर का है, उसको हाँ, आप ठीक है। Bottom left. Actually, even today I don't know for this session किस विषय पर है, मुझे नहीं पता। Actually मेरी गीता की क्लास थी 5:30 से 6:30 तक। अच्छा। तो मैंने बस जैसे उधर से फिनिश हुआ और मैंने ये ज्वाइन किया है। अभी मैंने जब तक सुना है, अभी प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है ना, थोड़ी सी। तो बात है वो भी, प्रोनाउंसिएशन इज पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो आप गीता सीख के आए तो गीता का ज्ञान बांटो। हम लोग कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इज समथिंग व्हिच वी हैव नोन फ्रॉम बचपन। हाँ, गीता का ज्ञान तो नहीं बांट सकती, पर उच्चारण के विषय में थोड़ा सा बता सकती हूँ। प्लीज गो अहेड। जैसे अभी किसी ने बात की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उच्चारण से, पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरा नाम उषा है, कोई मुझे उशी कहकर पुकारेगा तो आई वुड नॉट लाइक। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। तो उसी तरह से उच्चारण से अर्थ भी बदलता है। हाँ, है ना। तो इसलिए हम उच्चारण इसीलिए सीखते हैं क्योंकि हम बचपन में सीखते हैं। अब हमने मान लो पहली बार सीख रही हूँ, तो मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बावजूद भी उनका सिखाने का तरीके से मुझे पता चला कि प्रोनाउंसिएशन कितना वैल्यूएबल है। यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि हम लोग मोस्टली इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करते हैं। वैसे हमारी भाषा का हमें करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? मैं चाहती हूँ कि सब लोग, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा को भुलाकर इंग्लिश सीखना, उसे अडॉप्ट करना, आई डोंट थिंक कि ठीक है। मैं ज्ञान नहीं बांट रही, मैं इस लाइफ में आपको समझती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब हिंदी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें। I can't speak Hindi just like that. That is why I speak in English, where I have to choose between Tamil and English, you know. So if I speak in Tamil, that will be Greek and Latin to many. That's why we speak in English. Nothing against Hindi. Only thing is I don't know. That's all. But I think जैसे हम फ्रेंच सीख लेते हैं, तो हमें हिंदी भी तो सीखना चाहिए। मैं थोड़ी सी ये बात रखना चाहती हूँ आप सबके सामने। हिंदी मैं जान सकता हूँ, लेकिन बोलने इतने आसान से बोलना नहीं आता है। लेकिन रमन सर, लेकिन आप जब हम श्लोक बोलेंगे राम सर, तो इंग्लिश में तो नहीं बोलेंगे ना। Mantras, you know, they write in English and memorize. They writing is in English. Yes, Usha ji, I agree. I agree with you. बिल्कुल। At least one of the person is agreeing with me. Absolutely, होना भी चाहिए, हमारी मदर टंग है। मतलब मैं भी मदर टंग तो उनको आता है, राष्ट्रभाषा है बोले अब, because yes, राष्ट्रभाषा, yes. Knowing more languages is always a big advantage. Anyway, I have learned to understand it. बोलने पड़ जाएगा, तो हम इतने फ्लुएंटली बोल ले कि ऐसा लगे नहीं कि ये इंसान बोल सकता है। बहुत ही बढ़िया बना तुम्हारा कॉलेज, कम दिखा रहा है। Thank you so much for giving me the time to. No, आपने अच्छा ज्ञान बांटा है, अच्छा लगा सुन के आपका। हेलो, कोई गाना नहीं। सुरेश वासुदेव जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, this is my first experience with this group. हाँ जी। I'm only trying to find out what is happening, and I would like to participate in the future. Sure. I'm also grappling with the mobile. Okay. I'm taking the help of my grandson to help me out. Great. So we are all learning from our grandchildren. Very good. Yes. And we are proud of it. जमाना बदल गया। Okay, कैप्टन कुलदीप बराला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप सभी की बातों का, और खूब अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा भी ये मेड इन एक्सपीरियंस है,
और इसी लालच से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि चलती हुई गाड़ी में भी मैंने अपने आप को आप लोगों के साथ अटैच कर लिया कि कुछ ना कुछ अच्छे अनुभव सुनने के लिए मुझे मिलेंगे। डेफिनेटली जब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तब जरूर अपनी बातें भी रखूंगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी को जी रहे हैं हम, समझना कम और जीना ज्यादा चाहिए बस। अरे क्या बात कही आपने। जिंदगी में सबका एक सा हक है, सब तकसीम करेंगे, सारी दुनिया सारे दर्द बराबर हम तकसीम करेंगे। श्योर सर। थैंक यू कैप्टन जी। ज्ञान शुक्ला जी, आप भी कुछ फरमाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके। जी जी मैं लखनऊ से हूँ। वाओ। और मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। करीब 38.5 साल मैंने वहाँ पर सर्विस की। और काफी, चूंकि पब्लिक से मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा, तो बहुत से अनुभव भी वहाँ हुए। मैं आपको एक अनुभव छोटा सा बताता हूँ उसी बैंक का ही। मेरी ब्रांच उस वक्त 2 शिफ्टों में चलती थी। एक 4 घंटे 9 बजे से शुरू होता था 1 बजे तक, फिर उसके बाद फिर 1 से 4, 1 से 5 फिर 2 शिफ्टों में। एक बच्चा आया, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन का एक ड्राफ्ट बनाया, 200 रुपए सुबह वाली शिफ्ट। मैंने बना के दिया उसको। शाम को फिर 2-3 बजे आया, बोले अंकल जी इसको कैंसिल कर दीजिए। मैंने उसको कैंसिल कर दिया, जबकि 40 रुपया उसमें पड़ता था ड्राफ्ट की कमीशन और 100 रुपया कैंसिलेशन का चार्ज पड़ता। 100 रुपया या 50 रुपया, मुझे अब इतना याद नहीं है। मतलब काफी अच्छा। फिर अगले दिन वो फिर आया। मजेदार बात यह है, और बोला कि अंकल जी वो, फिर उसने वही फॉर्म भरा और बोला ये ड्राफ्ट बना दीजिए। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा बना तो रहे, चलिए। हमने कहा बेटा अच्छा ऐसा करना कि ड्राफ्ट तुम लेने ना आना, पिताजी को अपने भेजना, अपने पापा। मुझे लगा कि ये लड़का कुछ बड़ा कंफ्यूज है और परेशान है, क्या है इसके अंदर जो इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन ही बदल रहा सुबह से शाम तक में। तो आप समझिए कि मैंने, उसके पिताजी आए शाम को ड्राफ्ट लेने। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे करेगा जब इतना एक कंफ्यूजन में है। तो आप यकीन मानिए बिल्कुल रुआसे हो गए उनके पास। बोले बिल्कुल भाई साहब सही बात कह रहे हैं, इसके हम सब साथी चार्टर्ड अकाउंट में सेलेक्ट हो गए और ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो इसने सुसाइड तक करने की कोशिश। अब मतलब उस सीट पे बैठ के अगर मैं सिर्फ बैंक के हित में सोचता तो ये सब जरूरत नहीं थी। You went out of your way. लेकिन मैंने मानवता के हित में सोच के, तो मैंने कहा कि पहले उसको आप थोड़ा योग की ट्रेनिंग दिलवाइए, कुछ प्राणायाम करे, कुछ थोड़ा सा पहले अपने दिमाग को कंसंट्रेट करे, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट में भरे तो उसका फायदा भी है। अभी जब वो स्टेबल ही नहीं है उसका दिमाग, तो क्या फायदा है। तो इस तरह के अनुभव बड़े अच्छे मिलते थे कभी कभी। चलो ये भी लर्निंग। हाँ, जैसे सीखने को मिलता था। बहुत सही। और आपने तो इतने कस्टमर्स के साथ डील किए होंगे, so you would also would have learned a lot of soft skills. हाँ, बहुत चीजें सीखने को मिली। केस नहीं पहुंचाते हुए भी उनको जो बोलना है वो मैसेज देना है, उनको दुख भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैसेज जाना भी चाहिए। ऐसे स्किल्स जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कभी कभी तो तजुर्बे से सीखते हैं। कभी कभी तो आप समझिए ऐसे ऐसे कस्टमर तो जिनकी आप मदद करिए और तब भी वो आपसे नाराज होने लगते हैं। वो तो है। ऐसे भी एक आधे कस्टमर मिले। दुख भी इज्जत का नियम। और वैसे मेरी रुचि गायन में है। मैं गाने में भी पार्टिसिपेट करता हूँ प्रोग्राम। सीनियर स्टूडेंट में राइट प्लेटफॉर्म आपके लिए। आप सीनियर स्टूडेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हो? जी हाँ, करते हैं। म्यूजिक वाले प्रोग्राम में भी करते हैं। अभी कल से शुरू हो रही है। हाँ, कल से वो मुझे अभी वो भेजना है, वो एक वीडियो भेजना है, उसमें फोटो वोटो भेजने, वो सब थोड़ा रह गया। अभी आज देखिए भेज देंगे। बिल्कुल करिए। आई मीन
सीजन 11 स्टार्ट रजिस्टर तो कर दिया है। रजिस्टर करना काफी नहीं है। रजिस्टर करके आपको वीडियो भेजने, उसका एक प्रोसेस है ना, फॉर्म भर के वीडियो भेज, फॉर्म तो भर दिया था। होगा, फिर आपको अलॉट किया जाएगा ग्रुप में, ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। बट आप कल शाम को 6 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट यू विल नो हाउ इट इज, चलता है प्रोग्राम। हमने 1-2 बार देखा है, पहले शुरू वाले देखे हैं। हाँ, तो आप आई एम श्योर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने योगा को भी काफी ट्रेनिंग ली, पूरे 1 साल की, और होम्योपैथी में भी बड़ी रुचि है। मतलब जिससे किसी को कुछ फायदा हो, मैं सोचने की, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरे के काम आ सकूं, अपना विचार रहता है। नहीं, ये भी है कि हम लोग को पता भी चलना चाहिए हम क्या सीख रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है, ऐसे इट्स मैटर ऑफ फैक्टली कुछ हो जाता है, एंड देन वी डोंट इवन रियलाइज द अवेयरनेस दैट यू नो, उसमें डिफरेंस है, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू नो। सटल डिफरेंस आता है इसमें। अवेयरनेस रखते हैं। हाँ, बिल्कुल जी। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग सो मच फॉर अमंगस्ट अस। इसमें बहुत फायदा सबका है, एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू, एंड maybe you folks can also suggest any topic for next week जिसमें हम सब उसका लुत्फ उठाएंगे। अभी ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सजेस्ट, वी आर इन टच एटलीस्ट थ्रू द ग्रुप, और कुछ के साथ तो हम 1-on-1 भी टच में हैं, so we can do that. more आइडियाज बहुत और भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। रामन जी का आइडिया से हमने एक सेशन चलाया है, वैसे और भी है, वी कैन डू दैट। सो and don't forget, don't miss tomorrow's program, and then all the other important programs which add value to our lives. Saturday 5 o'clock is a very good session normally, जहाँ पे हम लोग को कोई डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए, how to go about, how to handle. Likewise, I saw one more session, I saw the recorded one, I couldn't go online. वहाँ पे I think the doctor, she was talking about blood pressure and sugar, how you can handle and manage. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया है कि छोटे छोटे नुस्खे, आई मीन थिंग्स आर देयर, यू नो, घरगुती औषध जैसा, यू नो। आई थिंक इट्स वर्थवाइल। आई एम श्योर कल्पना नहीं, सॉरी, अर्चना विल definitely, she has already shared the recording of that lady. I forget her name. I think she had a South Indian name, Dr. अच्छा, हाँ, भवानी स्वामीनाथन, राइट। कल सुबह 11 बजे उनका भी सेशन है, बहुत अच्छा था लास्ट वीक का। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू फोक्स ऑल्सो ज्वाइन। उनका आई थिंक लॉट ऑफ इनपुट शी गिव्स विच विल बी गुड फॉर आवर हेल्थ। अभी तो हेल्थ का हमको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सो दिस इज अ इवनिंग ऑफ आवर लाइफ, यू नो, एंड वी हैव सच इंस्पायरिंग 80+ year-old रामन जी हैं, इतने हमारे साथ गुल मिलके सिखा रहे हैं हमको। Fantastic. We are so happy that, you know, he's part of our group and he's enabling us to learn. Thank you so much, Raman ji, and all of you for your active participation. And we will meet again next week. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you, Lax. Thank you, ji. Thank you, Lax. Thank you, Archana, Firoz. Thank you all. Thank you all.